So student, we are going to see how to implement the Boolean function, any Boolean function using multiplexer. Okay, so this is the equation which is given, that is f of x comma y comma z, that is summation of m 1 comma 2 comma 6 comma 7. Okay, so this is the equation. I need to implement this equation using the multiplexer, right? So what is the first step? So you need to draw the implementation table. So what is that implementation table? Now this problem using can be solved with the help of one technique which is called as a hardware reduction technique. मतलब अभी यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना है with the help of which multiplexer, which type of multiplexer? 4:1 से सॉल्व करना है. ओके, अगर एग्जाम में यूजिंग 4:1 मक्स से किया तो यही स्टेप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर इज गिवन ओवर हियर, दैट इज 7. ओके, अगर ऐसा मेंशन नहीं किया यूजिंग मल्टीप्लेक्सर से, सो यू कैन यूज 8:1 मल्टीप्लेक्सर आल्सो, बट इन एग्जामिनेशन जनरली दे asked to solve the question using 4:1 max. मतलब इनपुट तो ज़्यादा है हमारे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल इनपुट कितने हैं? 4 है. तो हमें क्या करना है? हार्डवेयर रिडक्शन टेक्निक से सॉल्व करना है. सो व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन टेबल? नाउ in 4:1 multiplexer, tell me how many inputs are there. How many inputs are there? That is 4 inputs. How many outputs are there? 1 output. Yes. And how many select lines are there? Yes, 2 select lines are there. Okay, means we have a availability of this one and we need to implement this one. So 4 input है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? D0, D1, D2 and D3. ये फिक्स है implementation table. And this is what x bar and x. Okay, now so this is what आपको क्या करना है? यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से लिखना है, सर्कल नहीं करना है. सर्कल कब करने में बताता हूँ. 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6 and 7. After writing this one, what the numbers are given over here in the in the problem, what the numbers are given? 1, 2, 6, 7. तो 1, 2, 6, 7 को ही आपको सर्कल करना है. देखो मैंने यहाँ पे 1, yes, 1, 2, 6 and 7 को मैंने क्या किया है? सर्कल करके लिया. ओके, सो हाउ टू राइट दिस रो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाउ टू राइट दिस रो? नाउ देखो यहाँ पे D0 का कॉलम देखो स्टूडेंट, D0 का कॉलम देखो. यहाँ पे दोनों जगह पे भी सर्कल नहीं है, यस और नो? सो अगर दोनों जगह पे सर्कल नहीं तो यू हैव टू राइट हियर 0. यहाँ पे कहाँ पे सर्कल है? 1 को सर्कल है. 1 किसको क्रॉस करता है? x बार को. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? x बार. अभी आप D2 के कॉलम में देखो, दोनों जगह पे सर्कल है, तो आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है. दोनों जगह पे सर्कल नहीं तो 0, दोनों जगह पे है तो 1. और यहाँ पे सर्कल कहाँ पे है? एन सर्कल कहाँ पे क्या है? 7. सो इट कम्स अंडर x. सो यहाँ पे मैंने क्या किया? x, राइट? सो वी हैव गॉट दिस 0, x बार, 1 एंड x. नाउ यूजिंग दिस वन, using this I need to draw this diagram. That is the question, that is design this sum of product form of equation with the help of 4:1 max. Now how many inputs are there? That is, how many inputs are there? 4 inputs, that is 0, yes, 0, D0, D1, D2 and D3. Now tell me student, D0 पे मेरा आउटपुट मतलब मैंने क्या निकाला है? 0. तो मैंने क्या किया? कनेक्ट 0 कनेक्ट किया, दैट इज इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. D1 ये क्या है? x बार है. सो x कैसे निकलेगा? x बार कैसे? यहाँ पे x बार चाहिए. x बार कैसे निकलेगा? x और यहाँ पे अगर नॉट गेट लगाया मैंने तो यहाँ पे क्या आएगा? x बार. यहाँ पे x बार चाहिए, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू आर द D2 क्या आ गया है? 1 आ गया है, राइट? So no need to do any extra connection. And what about D3 क्या आ गया है? x आ गया है. So यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट? यहाँ पे क्या चाहिए? x बार. यहाँ पे क्या चाहिए? x. Okay. And how many select lines are there? What I have told you, 2 select lines are there. So I have written here y and z, the select line, and this is my single output. So this is the way we have solved this entire equation using 4:1 max, and it is also called as a hardware reduction technique. So simple.